Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am in chapter number. First chapter is about fundamental unit of life, the cell. In this chapter, fundamental unit of life, the cell. In this chapter today, my topic is to discuss और cytoplasm क्या होता है एंड सेल वैक्यूल्स। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर पे। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इट इज कंसिडर्ड एज द लिविंग फ्लूइड, इज अ लिविंग फ्लूइड इनसाइड cell, and this living fluid it is soluble part, it is soluble portion is known as cytosol क्योंकि cytosol जो है it contains soluble dissolved substances। साइटोप्लाज्म जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया है सेल के अंदर, लाइक डेमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनमें देखा गया है साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्यूलस, it is a granulous and is a massive granular. That part of cytoplasm is known as endoplasm. It is close to the nucleus. This part of cytoplasm, which is known as endoplasm, it remains close to the nucleus. It is granulous and is massive and non-viscous in state. And other is the ectoplasm. It remains towards the cell membrane. Ectoplasm, it is clear, glassy, transparent fluid, viscous, ज़्यादा ये viscous है ectoplasm and endoplasm. So then we can categorize here cytoplasm into a endoplasm and in ectoplasm. You might have observed in the amoeba-like organisms, both collectively the endoplasm and ectoplasm is known as the cytoplasm. मैंने यहाँ पे बताया cytoplasm जो है it is a living fluid which is found inside the cell. It is soluble portion is known as cytosol, wherein there is a lot of dissolved substances in it. And we can say in the cytoplasm you find various metabolic activities takes place in the cytoplasm. Various metabolic activities that take place inside the cell. So in those metabolic activities, some part of the substance are synthesized, that some are degenerating. कुछ पार्ट क्या होता है वो सिंथेसाइज होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, कुछ मटेरियल सिंथेसाइज उनकी होती है, सिंथेसाइज्ड मटेरियल, कुछ मटेरियल डिजेनरेट होते हैं। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक ऐसे एक्टिविटीज होते हैं in the cytoplasm, which is known as the living fluid of the cell. So that cytoplasm जो है it contain approximately, देखा जाता है जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म में कुछ आयन्स, we can say solute particles, कुछ simple substances, those remains dissolved
acetate. Those remains dissolved in acetate. उसके कारण जो साइटोप्लाज्म, इनके कारण ions, some simple substance, amino acids, sugars, we can say the fatty acids, hormones, pigments, they remain as dissolved in acetate in the cytoplasm. At that time, that portion of cytosol is known as the true solution. Because cytoplasm sometimes act that in a cytoplasm there is some portion which is known as cytosol, where there is a dissolved ions, dissolved solute particles, dissolved simple substances which are formed by the various metabolic activities, by various metabolic reactions. Those substances remains dissolved in acetate in that portion of the cytoplasm. That means sometimes cytoplasm कुछ portion true solution consider किया जाता है, and sometimes the same cytoplasm wherein you can find the big protein molecules, protein molecules, you find there protein molecules, you find there have fat droplets, you find there the fat droplets, जिनके कारण ये साइटोप्लाज्म कोलाइड्स बनता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन. तो हम कहेंगे जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कारण, कुछ बिग फैट ड्रॉपलेट्स के कारण साइटोप्लाज्म sometimes act as the, and sometimes that portion is of colloidal sol. गो ट्रू सोल्यूशन, डिजॉल्व सोल्यूशन भी एक्ट होता है, ये सोल टाइप सोल्यूशन भी एक्ट होता है साइटोप्लाज्म. आप देखोगे साइटोप्लाज्म में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पाए गए. ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाँ हमने ये चीजें इसमें ज्यादा पाया जाता है. सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, तो एटसेट्रा. तो बाकी एलिमेंट ज्यादा हमने देखा जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो है ये ज्यादा साइटोप्लाज्म में ये एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एलिमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं. बाकी ये जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है दे आर फाउंड इन ट्रेसेस इन अमाउंट इन द साइटोप्लाज्म. And in the cytoplasm also contains that it contains the 90% water, so that it is aqueous in जो साइटोप्लाज्म जो है it is साइटोप्लाज्म में 90% वाटर पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन स्टेट में होते हैं. इसके कारण में 90% वाटर होने के कारण में बहुत सारे मटेरियल सॉल्युबल रहता है और बहुत सारे मटेरियल इनसॉल्युबल इसमें पाता है. हम कहेंगे साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल इन स्टेट होते हैं, कुछ सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन स्टेट होते हैं. तो 90% वाटर के कारण इसमें क्या होता है, देयर इज अ वी कैन से देयर इज अ साइक्लोसिस in cytoplasm. That means there is a cycling in cytoplasm. There is cycling in cytoplasm, जिसके कारण से या हम कहेंगे साइक्लिंग या स्ट्रीमिंग, जिसमें मटेरियल्स का फ्लो. When there is a cyclosis in the cytoplasm, that is cycling in cytoplasm, there is a flow. Because of the cyclosis, there is a flow of nutrients, insoluble materials, enzymes, amino acids, proteins. बहुत सारे साइक्लोसिस के कारण देयर इज अ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल ऑर्गेनेली टू अनदर सेल ऑर्गेनेली, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल
to the outside of the cell. तो ये जब कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर बनता है फिर उसको बाहर आना होता है, that is a floating in the cytoplasm, this aqueous state of material wherein there is a regular flow of the material from cell organelle to organelle, there is the movement. और इस cyclosis के कारण it helps us in the amoeba like organism to have a pseudopodia like projections, help in the locomotion purposes when there is a flowness in the cytoplasm. Cyclosis जिसके कारण cyclosis के कारण क्या होता है, there is a flow of nutrients, enzymes, hormones, pigments, other important जो constituents of biochemical life के जो important constituents है, I mean the amino acids, I mean the fatty acids, glycerol, I mean the glucose, I mean the peptides, short chains of the proteins. तो बहुत सारे ऐसे एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो एक जिनसे एक लाइफ बनती है, तो उनकी भी फ्लोनेस होती है. उनकी मतलब मैं कहूँगा कि जो साइटोप्लाज्म है बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें. Lot of the biochemical reactions takes place. Biochemical reactions takes place within the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म ऐसा एक बैकग्राउंड है जिसमें सेल के अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो फ्लोटिंग इन स्टेट रहते हैं. तो साइटोप्लाज्म में हमने देखा है इंपॉर्टेंट, यो ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रोटीन फाइबर्स. साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि प्रोटीन फाइबर्स दे गिव द रिजिडिटी टू द these protein fibers are known as the cytoskeleton. नाम से कुछ पता चलता. Cytoskeleton gives the rigidity inside the cell, inside the cell. So they give the rigidity, flexibility to the cell because of these protein fibers. These are transparent tubules. When they have the network of these protein fibers, they are known as the cytoskeleton. They form the cytoskeleton. These are the transparent glass. ये दिखाई नहीं देता in the cytoplasm, but internally they give us the rigidity. आपने देखा जब हमारा छाता होता है umbrella, उसमें कैसे spokes लगे हुए होते हैं. वो spokes क्यों होते हैं उसमें, ताकि वो umbrella अच्छी तरह से फैल सके जब भी पानी बारिश या मतलब in the snowfall it can remain stand. हाँ, इसमें मजबूती देना, to give the strength to the umbrella having the spokes. तो इसी तरह से सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं. they give the rigidity, flexibility in interior of the cell, ताकि सेल एक फिक्स्ड स्टेट साइज में रह सके और सेल ऑर्गेनेल्स को दायां बायां प्रोटेक्शन मिले. This is the all about the cytoplasm. Sometimes various metabolic, catabolic, anabolic reactions takes place within the cytoplasm, जिसके कारण बहुत सारे important constituents बनते हैं. वही constituents फिर utilize होते हैं by the cell organelles to perform various life activities, which are very needed for the protein synthesis, which is very needed for the synthesis of the cell membrane, for the ribosomes, for the synthesis of the DNA, RNA. वो चीज़ें फिर बायोकेमिकल्स जो अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म. समटाइम्स साइटोप्लाज्म stores the glycogen, excess of glucose, proteins, stores the enzymes, important hormones, important pigments, important starch granules. तो important बहुत सारे चीजें इसमें स्टोर. दैट मीन it also stores very important material any time, any way that can be used by the cell. तो इस तरह this is all about the cytoplasm. Plasm means the fluid. Cyto means they have the cycling. That means it is that type of fluid which has cycling, which has flowness, which has streaming, that remains
that remains flow to flow, that has a fluidity. It is the plasma is as known as a fluidity. It is a gel-like fluid inside the cell, which makes the flow of the material from organelle to organelle, from the cell to the outside of the cell. This is all about the cytoplasm. Now is the cell vacuoles. Cell vacuole जो होता है, they are larger in size in plant cells. हम कहेंगे in plant cells they are prominent. ये prominent होता है, visible. तो ये जो cell vacuole अगर हम कहेंगे, these cell vacuoles are smaller in size, शबह in animal. ये एक important difference है, differentiating point है between the plant cell and animal cell, and they remain smaller in size in the animal cell. These vacuoles are larger in size in plants. तो अगर हम plant cell, animal cell, whatever the cell vacuole is, cell vacuole क्या होता है? ये एक fluid हम कहेंगे membranous organelle है, containing the cell sap. Sap होता है रस, fluid, it contains the cell sap. ये क्या होता है? If we talk about especially the plant cell में, ये बहुत visible रहता है, prominent, larger in size. क्या ये plant cell में कहा जाता है कि 90% वॉल्यूम जो होता है सेल का ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई द 90% बाय वॉल्यूम. तो ये क्या, ये प्रोमिनेंट रहता है, प्लांट सेल में ज्यादा दिखाई देता है. देयरफॉर द प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो टू द साइड होता है, साइड पे चला जाता है. क्या, क्यों? क्योंकि उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर इन साइज रहता है, जिनके वजह से आमतौर पर देखा जाता है जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड रहता है, क्योंकि सेल वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं. व्हाट आर दीज वैक्यूल? दीज आर द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली कंटेनिंग द सेल सैप. जो इसमें सेल वैक्यूल जो होता है, इट इज बाउंडेड, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसका भी अपना मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल membrane. It is covered by a semi-permeable membrane that is specially known as, exam में आता है objective, tonoplast. तो tonoplast क्या होता है? tonoplast semi-permeable membrane होता है जो न्यूक्लियस को कवर करता है. It covers the nucleus by a membrane. That membrane is single membrane. It is covered by a single semi-permeable membrane. That membrane is known as a tonoplast. The tonoplast is a semi-permeable membrane of cell vacuole. That cell, within the cell vacuole, we find a cell sap. In the cell sap, what is present in the cell sap? Important to mention. It contains the storage of the starch. It contains the storage of the sometimes glycogen. It contains the storage of pigments. It contains the storage of hormones, essential amino acids. That means cell sap sometimes contains the storage of the important organic biomolecules, or sometimes inorganic biomolecules contain करता है. कभी भी सेल को जरूरत पड़ सकता है, तो उस वक्त यहाँ से ये वैक्यूल से निकल के ये उस वक्त सेल के अंदर अवेलेबल करा सकते हैं. तो हम कहेंगे, अगर यही वैक्यूल्स की हम बात कर लेंगे इन द एमोबा में, इन द एमोबा इट इज कंसिडर एज द कॉन्ट्रैक्टाइल. इट वर्क देयर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसका इसको नाम पड़ता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इट गिव्स द, it functions as osmoregulation. That means it balances the water content in the cell, balance water
water content, water concentration, water content inside the cell. That means cell कभी भी सेल को जरूरत पड़ता है पानी, उसको उस वक्त ये अवेलेबल कर रहा था, या सेल के अंदर कभी कभार एक्सेस पानी होता है, ज्यादा पानी होता है सेल के अंदर, उस वक्त वाटर इसी वैक्यूल में स्टोर रहता है। या कभी कभार सेल के अंदर पानी की किल्लत होती है, इंपॉर्टेंट आयोन्स, इंपॉर्टेंट सोल्यूट पार्टिकल्स की किल्लत होती है, तो अवेलेबल यही से कराता है। देयरफॉर जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर किडनीज फंक्शन करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, वाटर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस रखता है, सोल्यूट इसका रेगुलेशन करता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल इन वैक्यूल्स को स्पेशली नाम पड़ता है एमोबा में contractile vacuole. This is a osmoregulatory organ which its function is to have a osmoregulation. Osmoregulation में क्या होता है? There is a balance of water molecules, water content inside the cell, and in the same way they have the multiple work in the cell. Cell vacuoles का देखा जाता है काम differentiate होता है। तो हमने देखा है in other type of cell, in the cell it performs the other job. Here we can say that sometimes the vacuole, these cell vacuoles contain the food particles. अगर हम इसी की बात हम कर लेंगे एमोबा by means of phagocytosis, it take the solid food particle by means of, it takes the solid food particles by that at that time these vacuoles are simply known as the food vacuoles. These food vacuoles are the membrane bounded, contain the food particles, and also sometimes these vacuoles, if we talk about the animal cell here, usme you will find the food vacuole there. Sometimes these vacuoles contain the shaba, they contain the wastes, and when they are the waste laden vacuoles, then they are also the vacuoles which contain the wastes by means of exocytosis. They are expelled out of the cell, expelled out of the cell. को ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। हम कहेंगे इट देयरफॉर इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन फूड वैक्यूल्स इस कदर इस लिहाज से detoxification. Sometimes food vacuole in the animal cells contain the wastes, and then there is the exocytosis, जिसके कारण ये vacuole फिर cell membrane के साथ फ्यूज होके एक्सपेल होता है वहां से सेल के बाहर मटेरियल, वो वेस्ट। तो डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल या बाय द सेल। हम कहेंगे समटाइम इट कंटेन द फूड वैक्यूल, और वी कैन से दैट इन एमोबा इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो बहुत सारे इसके नाम है। तो जो वैक्यूल्स का आमतौर देखा जाता है कि वैक्यूल कंटेनर्स जो है, अगर हम बात कर लेंगे, इट रिजर्व्स द वाटर, इट इज प्राइमरी जॉब, इट रिजर्व्स water concentration inside the cell. तो इसके कारण it develops a pressure, that is the osmotic pressure. वो osmotic pressure को यही बैलेंस भी करता है। It regulates, it maintains the osmotic pressure and keeps it balanced to the exterior pressure. जब इस वैक्यूल में पानी एब्सॉर्ब होता है, it absorbs, it takes the excess amount of water, then they develop a pressure against the walls of the vacuole. वो प्रेशर ये रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो ये कहा जाता है, इट
helps in maintaining the shape of the cell. Plant cell keep maintain shape that they are larger in size in there. Also it is proved that it contains the metabolic substances. जो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन से वो सब्सटेंसेस बने हैं उनकी क्या करता है, इट कीप्स द storage of those materials. I talk about the storage of those materials, that is the, we can say, the starch granules, granules we can say. Also it keeps the essential protein molecules, protein का भी fat droplets का भी storage, fat droplets. Also it is a reservoir, in function. It also maintains some essential solute particles. इस कदर इस लिहाज भी सेल वैक्यूल प्लांट सेल के लिए important है, या sometimes essential pigments are also stored in the vacuoles. Some occasionally they are needed by the cell, then they are released by these vacuoles and make available in the cytoplasm. तो सेल वैक्यूल का ये काम होता है कि प्लांट सेल में ये लार्जर इन साइज रहता है और एनिमल सेल में ये स्मॉल विजिकल्स फॉर्म में रहते हैं. तो इसका इम्पोर्टेंट काम यही है कि it stores maximum amount of water in the cell sap. अगर देखा जाएगा, मैंने बताया कि vacuoles में there is a cell sap. In the cell sap कहा जाता है कि 70-80% of the water content remains in these vacuoles. Anytime, anyway, cell needs the water, cell is in thirst, and at that time water is made available by these vacuoles. Dear students, I hope you understand about the cytoplasm and the cell vacuoles. So I hope you understand about this, and it is the last lecture of this chapter, and we concluded the unit first syllabus, which contain only this chapter, fundamental unit of life. And you should go to my videos again and again. You should watch, and then you should clear your confusions. And so this is all about the topics. I hope you understand. Thank you.